Let me see if I'm live. Let me see. खुद के फोन में खोल के देखते हैं. हाँ. Okay, guys. The game week 3 deadline in an hour, and as usual, we are kind of clueless. A lot of decisions to make. एंड अभी क्या है ना, फिक्चर्स अभी फाइनली फॉर्म दिख रहा है ना, प्लेयर्स का फाइनली फॉर्म दिख रहा है. वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सैम्पल डेटा. वी आर फाइनली able to judge certain kind of players. So let me just share my screen. Hmm. तो मैंने 2 बार खोल रखा है. 1 मिनट. यप, आई थिंक अभी स्क्रीन दिख रहा होगा. या तो आई थिंक या लास्ट गेम वीक का पहले जल्दी से बात कर लेते हैं. लास्ट गेम वीक में 2 differentials who like really helped my game week. एक्चुअली मैं नहा के निकला हूँ यार. ऑब्वियसली भाई भाई काम कर रहा था सुबह से, एंड देन अभी नहा के निकला हूँ मैं फाइनली. तो या कहाँ था मैं. हाँ, लास्ट गेम वीक 77 पॉइंट्स, एवरेज 69, नॉट बैड. ओके, तो अभी 77 में 2 differentials काफी काम आए. वैंडविन हु ऑलमोस्ट यू नो जिसका हैमस्ट्रिंग ऑलमोस्ट गया था फर्स्ट हाफ में, एंड ही वाज अबाउट टू गेट सब्ड ऑफ, बट ही स्टेड थ्रू एंड पूरा पिच भाग के मेरे को असिस्ट दिया वैंडविन ने. हेलो भुवन भाई, हेलो. देन वी हैव मॉर्गन गिब्स वाइट हु गॉट 10 पॉइंटर. So now Ward Pros has moved to Nottingham Forest. So let's see how that goes around. And then yeah, Isaac फिर से वही अग रहा है, सेम चीज है. ब्रूनो एंड गर्नाचो. ब्रो दिस अबे हैज हिज प्रायोरिटीज भाई. अबे की टीम निकालते हैं, अबे की परफॉर्मेंस देखते हैं इस गेम वीक की. अबे को हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा. कहाँ है अबे, कहाँ है? नीचे से देखना पड़ेगा. ओह रहा. ओके, पेड्रो पोरो, अकांजी, लुइस डियास. भाई लुइस डियास काफी है. ओडेगार्ड हटा ब्रो. ओडेगार्ड क्या कर रहा है तेरी टीम में? इतना बड़ा इम्पोस्टर है ये. कितने भाई, 8.5 मिलियन का बंदा तूने ले रखा है भाई. यूजलेस लूजलेस बंदा है भाई ये. स्मिथ और बेंच. दैट डजंट हर्ट भाई. ऑब्वियसली दैट डजंट हर्ट, राइट? अबे दिस डजंट हर्ट, राइट? इसके बाद या गानाचो एंड ब्रूनो, आई थिंक यू हैव टू रिमूव वन ऑफ देम. आई विल से गानाचो को हटाओ. I don't think you have money in the bank as well. So go to a Rogers. Go to a Rogers or something like that. Rogers या फिर Smith-Rowe तो है you. You already have Smith-Rowe, so Rogers might be your call. बाकी Bruno, you can give him one more chance. But remove Odegaard if you can, bro. 8.4 million is a lot. Okay? So हाँ, तो पहले हम जैसे बात कर रहे थे, इस गेम वीक में फिक्चर्स काफी तगड़े. बट द डिफरेंस इज दैट दिस इज द गेम वीक बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक वही सड़ा सा, मतलब अभी सीजन चालू हुआ है एंड इन लोगों को इंटरनेशनल ब्रेक रखना है. मतलब देयर इज नो रीजन, मतलब कुछ लॉजिक बनता है इसका. मतलब 2 वीक में चालू हुआ है सीजन है, इन लोग को फिर से इंटरनेशनल ब्रेक करना है. ओके, तो अभी हम क्विकली जाते हैं ट्विटर में एंड वी विल जस्ट सी द इंजरी न्यूज इफ देयर आर एनी इंजरीज राइट नाउ, एंड लॉट ऑफ साइनिंग्स एज वेल. सो विच वॉज द मोस्ट मतलब सरप्राइजिंग साइनिंग, मतलब डेडलाइन में जो होती है ना, पिछले सड़े हुए लास्ट 10 मिनट में रैंडमली कोई स्ट्राइकर जा रहा है, जैसे कौन था वो, ब्रोआ. ब्रोआ वॉज रिजेक्टेड बाय इप्सविच, ही वॉज रिजेक्टेड बाय फुलहैम, एंड देन अभी गया है वो एवर्टन में. तो अभी हम पहले इधर आ जाते हैं. कितना स्क्रीन दिख रहा है आपको?
और जूम इन कर दूं क्या? हाँ, तो अभी न्यूज की तरफ चलते हैं। आह, ओके, पहले आ जाते हैं टायरमिंग्स। ये तो बहुत टाइम से आउट है। मैटी कैश इज आउट because of hamstring for at least a month. So we have Costa Nedeljkovic, जो 4 million का, by the way. Costa Nedeljkovic is a replacement for Matty Cash. एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको अगर if you're looking for a defender, if you want to remove a defender, Costa Nedeljkovic replaces Matty Cash, who's injured for a month. Okay, तो ये चीज हमें पता चलता है। And going to the next news. नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ओके, इसमें तो ब्रॉडहेड आउट है। कैल्विन फिलिप्स इज देयर टू फेस हिज क्लब। ब्रोआ इज आल्सो देयर। रॉड्री इज मच बेटर। कोवाचिच एज वेल। फिल डजंट फील गुड। फिल फोर्डन को हुआ क्या है? मतलब क्या इसको, मतलब इसको लीव लेना है क्या? मतलब क्या इतना लेट क्यों है? इसको क्यों हो रहा है? आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आ जाएगा। सो अ लॉट ऑफ मैनेजर्स आर लुकिंग फॉर सैवियो और डोकू, बट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस फोर्डन आ जाएगा, तो यू हैव टू रिमूव हिम अगेन। सो दैट इज बाय नो सैवियो और डोकू फॉर नाउ। Rahul, what do you think will be City's lineup? It was an unchanged lineup, right? So is game week the same lineup रहेगी? Or do you see someone like Grealish starting? Oscar Bob, Rico Lewis, someone who is in demand right now. So yes, and then we have Mason Mount has joined the injury list, and Hoyland is out as well. So will we see Zirkzee starting, or will we see Rashford in number 9 and then Garnacho playing on the wings? Garnacho start कर जा भाई, कितना मतलब कितना। Okay, Mark Gay is not going to Newcastle. I think last minute में इसको fall out हुआ है, so that's good news for Palace. And Palace has signed few defenders, you know. तो उस हिसाब से it's good for Henderson. Nelson Semedo returns. अच्छा, इसको रेड कार्ड मिला था क्या? एंड व्हाट डू वी कॉल, सैम जॉनस्टन इज साइंड फॉर वुल्व्स। उसके बाद मिकेल मेरेनो पता है कैसे इंजर्ड हुआ? आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, उसका शोल्डर फ्रैक्चर हुआ, उसके ऊपर ट्रेनिंग में वो गिरा, उसके ऊपर मार्टिनेली गिर गया, तो उसकी वजह से मिकेल मेरेनो का फ्रैक्चर हो गया शोल्डर। सो ही विल बी आउट फॉर अ व्हाइल। मतलब दैट्स सो सैड। आते ही मतलब शोल्डर इंजरी हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया लिटरली। Tomiyasu is out and Tierney is out. So I think Timber will start again. Timber should start again as a left back. Romeo Lavia and Reece James aiming to return. हाँ, अभी पता है तुम्हें रैंडमली प्लेयर्स दिखेंगे जो रैंडमली गायब हो जाएंगे। पता है इंटरनेशनल ब्रेक में रैंडम इंजरीज हो जाएंगे। स्टर्लिंग का आएगा सबसे पहले। उसको बोले कुछ फील हो रहा था मुझे, है ना, इसलिए मैं नहीं खेलने नहीं जा सकता अपने इंटरनेशनल टीम के लिए, है ना। ओके ब्रो, ठीक है भाई, ठीक है, ये करना है अभी हमें हमें ये करना है। ओके, अनचेंज तो नहीं होगा वो नहीं, 3 बार नहीं हो सकता, ट्वाइस हो सकता है। सोलांके इज स्टिल आउट बाय द वे। सोलांके गेम वीक 3 में आउट है। रिचार्लिसन इज आउट। सो उनका वो जो उनने साइनिंग की थी ना, ओडो पोर्ट या कोई था, ही स्टार्ट अगेन आई गेस। या फिर सोनी को नंबर 9 स्टार्ट कराओ भाई, he'll get points again. किएसा 10 मिलियन 7 मिलियन रिवील हुआ है, नॉट बैड। ओके, तो हमने न्यूज कवर अप कर लिया क्या? न्यूज और कौन है? ये कौन है? मेसन होलगेट है क्या? कौन है ये? नहीं मालूम, जो भी है। ओके, ओ रैम्सडेल इज बैक। तो रैम्सडेल इस गेम वीक तो नहीं स्टार्ट करने वाला, पर नेक्स्ट गेम वीक से जरूर। विलॉक, सैंडो टोनाली इज बैक। टोनाली खेलेगा शायद, सब ऑन होगा। हाँ, बाकी सब तो बकवास है। एंड देन वी हैव डेविड ब्रुक्स। ओके, बॉर्नमouth का फर्क नहीं पड़ता हमें। ओके, केसा, any more transfer news? Oh, sorry, not transfer news. Any injury concerns? Any more injury concerns? So no. तो वापस आ जाते हैं, अपनी टीम में आते हैं। तो अपनी टीम से मैंने हटाया एनकुकू को। एनकुकू जो 2 बार प्राइस फॉल हो चुका है, नॉट जस्ट वन। 6.4 हुआ था, 6.3 हो गया था, अभी 6.3 हुआ है आज सुबह। तो लकीली मैंने मंडे नाइट को आई हैव मेड माय ट्रांसफर फ्रॉम एनकुकू टू रॉजर्स। अब रॉजर्स की बहुत तारीफ हो रही है, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनाई एमरी ने बहुत तारीफ किया, बहुत सही बंदा है, सिटी ग्रेजुएट। आई थिंक रॉजर्स इज अ सिटी ग्रेजुएट एज वेल, तो सही है। पर सिटी भी स्कैम है, सिटी का अकेडमी भी बहुत स्कैम है, बिकॉज
वो वेस्ट ब्रॉम से प्लेयर खरीदती है अपने एकेडमी में, फिर बोलती है कि सिटी एकेडमी। ओके, तो अभी रॉजर्स के फिक्चर्स देखो, अभी लेस्टर, एवर्टन, वुल्व्स, इप्सविच, यूनाइटेड। यूनाइटेड को भी आप ग्रीन में ही काउंट कर लो। ओके, नो वरीज। तो ओवरऑल सेट एंड फॉरगेट वाला मामला है रॉजर्स के साथ। एंड 5, मैंने तो 5 मिलियन में लिया था, अभी 5.1 हो गया। तो आई सी हिम हिज प्राइस गोइंग अप अगेन दिस गेम वीक। तो यस, आई हैव ब्रॉट इन रॉजर्स, बट आई विल स्टिल हैव 2 प्रॉब्लम्स, या फिर आप 3 बोल लो। आई हैव एजे, गानाचो एंड अ थर्ड डिफेंडर का प्रॉब्लम। I have Van de Ven and Lewis Hall. Lewis Hall was not started in the last game week, which is sad, which is really sad. But yeah, I'm looking at Van de Ven. I think start करेगा क्योंकि press conference में कुछ बताया नहीं. Isak and Muto bring in Salah. Yeah, definitely, definitely. I think Salah. I think people have realized that going without premiums might, cause problems for them. And if you're going for someone like Haaland or Salah, I can drop anyone. Okay. तो हम पहले हाँ क्या थे, यू आर ड्रॉपिंग इज़ाक एंड ब्रूनो। आई थिंक यू कैन गिव वन मोर चांस टू देम बिकॉज साला खेल रहा है यूनाइटेड को ऑब्वियसली। तो तू खुद लाने की सोच रहा है। यू आर अ यूनाइटेड फैन, यू वांट साला इन योर टीम, दैट इज सो सैड। यू शुड जस्ट होप दैट ब्रूनो गेट्स अ पेनल्टी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और बस यही होप कर ब्रूनो शुड गेट अ पेनल्टी, which can happen. Okay, and then and whatever, Isak you can give one more. देखो, let me just tell you about some transfers का तुम पता है थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो अभी, बिकॉज अभी इंटरनेशनल ब्रेक है। इंटरनेशनल ब्रेक में सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स जो इंजरी से वापस आ रहे होते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड इन द लाइनअप्स एज वेल। सो if you're making big decisions right now, don't do that. Yeah, for Haaland and Salah is an exception because they are proven assets. They are the kings of this game. फिर उसके लिए आप कर सकते हो, but I think for now, if you are Bruno and Isak are still dependable, I think चलेगा. If you are Haaland, जब तक you have Haaland, it's fine. Salah, I think you can hold on to. A lot of managers are going for Palmer over Salah because they feel that Chelsea के fixtures better हैं. Yes, they are, but Chelsea is Chelsea. Chelsea में obviously Palmer is the one who carries the team, and FPL asset में he is the best because Madueke के अभी तो उनने सैंचो साइन कर लिया है भाई, सैंचो वैंचो। तो फिर मतलब हाँ, चेल्सी के पास they lacked a lot of wingers and that's why they have brought in Sancho, which is fine, which is very much logical. तो मेरे टीम में अभी गिब्स वाइट, चलो गिब्स वाइट सही है, बट अभी वार्ड प्रॉस साइन कर लिया है। तो वार्ड प्रॉस के आने के बाद कैसा इम्पैक्ट होगा, दैट इज टफ टू जज and tough to predict. So I'll just wait out. I'll just watch कि कैसा गेम है। And गानाचो भाई, गानाचो स्टार्ट करवा दे यार प्लीज, अबे स्टार्ट करा दे। उसके बाद एजे 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 कैन डू समथिंग वर्सेस चेल्सी। मेरे को नहीं लगता इजी होने वाला है। हाँ, बिग वीकेंड फॉर एजे। I think a lot of managers have already sold him because a lot of managers have gone for either Smith Rowe or Rogers or have moved to either Jota or Luis Diaz. So it will be a great return for managers who have kept faith in him. Although मैं अभी पता है मैं actually अभी सोच रहा हूँ कि मैं एजे टू जोटा कर सकता हूँ और गानाचो टू जोटा। दैट इज समथिंग दैट आई एम थिंकिंग अबाउट। अब थोड़े लोग वाइल्ड कार्ड के बारे में सोच रहे हैं, तो वाइल्ड कार्ड इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट जस्ट दैट तुम्हें इतना सैंपल, यू हैव टू वॉच मोर। आई थिंक अभी सीजन में अब तुम उस पॉइंट में नहीं आए हो कि यू कैन मेक डेफिनेट मूव्स, यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट दैट वाइल्ड कार्ड, राइट। आई थिंक सॉन सही है, सॉन, अबे दीज ऑल एसेट्स आर रियली गुड। साका, सॉन, ब्रूनो इज स्टिल आई थिंक नॉट अ बैड ऑप्शन, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि मतलब because if you want Salah and Haaland if your team in your team, then you cannot get them. You cannot get Son and Saka if you want Salah and Haaland. So वही तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है। एंड टॉटनहम एसेट्स में सोलांके था, a lot of managers had Solanke, they have transferred him out. उसके बाद a lot of managers have Pedro Porro, and Pedro Porro is a fixture proof till now, yes or no, I'm not sure, because they are facing Newcastle and Arsenal. तो ये तीन मतलब स्पर्स के एसेट्स हैं which are highly in demand. इसके अलावा कुलुसेव्स्की रोटेट्स, रिचार्लिसन खेल नहीं रहा, ब्रेंडन जॉनसन रोटेट्स,
एंड देयर इज वन मोर विंगर, नाम भूल गया मैं, दैट गाय आल्सो रोटेट्स. तो मेन तीन एसेट्स हैं स्पर्स के, दैट आर सॉन, सोलांके हु इज इंजर्ड राइट नाउ, एंड पेड्रो पोरो. पेड्रो पोरो काफी हाईली ओन्ड है, बट या यू हैव टू सी कि इस फिक्चर्स में आप 5.5 मिलियन एसेट को रखना चाहते हो कि नहीं. इसके बाद द प्लेयर आई एम लुकिंग फॉर, ओके, इज व्हाट माय एग्जैक्ट प्लान इज. देखो मैं पहले क्या सोच रहा था, आई कैन रिमूव ईदर वैन डेवन और लुइस हॉल. चलो लुइस हॉल अभी के लिए हटाते हैं, एंड आई कैन गेट वैन डाइक, वर्जिन वैन डाइक. यस, वर्जिन वैन डाइक इज हियर एट 6 मिलियन. एग्जैक्ट फंड्स है मेरे पास, पैसा है देख भाई के पास, 6 मिलियन एग्जैक्टली. 6 मिलियन भाई ने इन्वेस्ट किया, एंड देन फाइनली एग्जैक्ट फंड्स है मेरे पास. बट अगर मैंने वर्जिन वैन डाइक को लिया तो आई कैन नॉट गेट डियोगो जोटा, एंड आई वांट डियोगो जोटा इन माय टीम फ्रॉम द नेक्स्ट गेम वीक एट लीस्ट. तो मैंने ये, मेरे पास एक और फ्री ट्रांसफर है बाय द वे. आई हैव मेड माय वन ट्रांसफर, दैट इज एनकुकू टू रॉजर्स. बट सेकंड फ्री ट्रांसफर मोस्ट लाइकली, अब देखो, मोस्ट लाइकली आई एम गोइंग टू बैंक द फ्री ट्रांसफर नेक्स्ट गेम वीक में. आई थिंक आफ्टर दी, हाँ जो, अरे ब्रदर, ब्रदर थोड़ा इलीगल हो जाएगा यहाँ पे, मामला थोड़ा इलीगल हो जाएगा, बट व्हाई नॉट. अरे यार डिफरेंशियल होता तो अभी तक एक 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 तो असिस्ट आता ना, या फिर इवन द स्टैट्स आर, ही इज नॉट प्लेइंग दैट फ्रंट, दैट्स अ प्रॉब्लम. अभी काफी हावर्ड्स भी काफी डीप ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसके वजह से ही इज नॉट मूविंग दैट फॉरवर्ड, दैट्स अ प्रॉब्लम. बट ही इज नॉट अ बैड एसेट ऑब्वियसली, बट वही प्राइस पॉइंट का हो जाता है ना. आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट 8.5 मिलियन फॉर अ प्लेयर who might or might not do well? Watkins captain or very risky. Watkins is facing who? Watkins is facing Leicester. Oh, not a bad option. Not a bad option. Watkins की तरफ move करेंगे लोग. Eventually, people will move towards Watkins from the very next game week because Isaac is not doing well. So Isaac has to perform versus Spurs. It's a do or die game week for him as an FPL asset. Because फिर लोग Watkins की तरफ, everyone is going to move towards Watkins. So yes, Watkins is not a bad captaincy shout for this game week. हाँ, ओके. भाई वैल्यू तो कम हो रही है टीम की, टैक्स ही लग रहे हैं. तो उसके बाद यस, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट यस. एंड द सेकंड ऑप्शन, मेरा फर्स्ट था वर्जिन वैन डाइक, एंड द सेकंड वन इज यस, आई वांट टू रिमूव ईदर गार्नाचो और एजे फॉर लुइस दियाज. लुइस दियाज, सो लुइस दियाज मस्त नाम है, ठीक है. और डियोगो जोटा, ठीक है. डियोगो जोटा के बेसिकली अगर आप कंफ्यूज हो बिटवीन डियोगो जोटा और लुइस डियाज, डियोगो जोटा हैज मोर शॉट्स ऑन टारगेट एंड लुइस डियाज इज समवन हु क्रिएट्स मोर चांसेस. सो व्हाट डू यू प्रेफर? बट अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, एक एक पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट में आते हैं कि आई थिंक इन अपकमिंग गेम वीक्स आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, लुइस डियाज इज गोइंग टू स्टार्ट मच मोर देन डियोगो जोटा. बिकॉज अभी तो डार्विन नूनेज इज नॉट इन द लाइट, बट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद रैंडमली आ जाएगा. एंड once he starts, even scoring one or two, I think he might start over Jota. So that's the problem. And इसलिए पता है मैं अभी थोड़ा झिझक रहा हूँ जोटा को लेने में, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कैसा सीन होगा वी डोंट नो. ओके, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. एक मिनट. या तो हाँ यार, आई थिंक हालैंड, अभी तक लोगों को समझ जाना चाहिए कि हालैंड कितना इंपॉर्टेंट है. इट्स ही इज मोर इंपॉर्टेंट देन साला, बिकॉज yes, I know 15 million for Salah, but still, sorry, 15 million for Haaland, but it's worth it. It's more worth it than if you're going Palmer over Salah. I can understand. Okay, I can totally understand because Palmer is much more consistent. Salah कभी-कभी wide खेलने लगता है, but Haaland can, he can bag back-to-back hat tricks in consecutive game weeks. That's the problem. The whole city is playing for him to score.
You know how ridiculous is that? Everyone is working hard just for Haaland to score. सो इसलिए हालैंड इज अ मस्ट हैव. अगर आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर, अगर आप सोच रहे हो कि आपको थोड़े मूव्स करने इस गेम वीक, बट इफ यू डोंट हैव एनीवन लाइक साला और हालैंड, आई वुड टेल यू टू टेक अ हिट. आई विल टेल यू टू मेक द मूव्स. पर इफ यू आर कंफ्यूज्ड फॉर रिमूविंग इधर एजे और ब्रूनो फर्नांडिस, देन आई विल से वेट फॉर वन मोर गेम वीक. क्योंकि आपको थोड़ा और टाइम मिलेगा और थोड़े प्लेयर्स को जज करने के लिए. आपको इंटरनेशनल ब्रेक में और टाइम मिलेगा और डेटा मिलेगा और आपको सैंपल साइज बड़ा होगा आपका, और एंड दैट्स यू कैन मेक बेटर डिसीजंस. ठीक है. बट अगर आपके पास अबे के जैसे कुछ ऐसे गंदे प्लेयर है जैसे ओडेगार्ड है, तो फिर वो हटाओ. वो तो यूजलेस है. मतलब आप यहाँ पे इतने हजारों प्लेयर स्कोर कर रहे हैं भर भर के, एंड वो बंदा ओडेगार्ड लेकर बैठा है. व्हाट अबाउट डिफेंडर्स? ओके, डू यू वांट ऑप्शंस डिफेंडर में? अगर आपको ऑप्शंस चाहिए डिफेंडर में, एक मिनट. हाँ, डिफेंडर्स, इफ यू गो टू डिफेंडर्स, आई थिंक अभी के लिए ग्रेट एसेट वुड बी एंटनी रॉबिन्सन, जिसका भी प्राइस रेज हुआ है फॉर 4.6 मिलियन, because Ipswich, West Ham and Newcastle, West Ham and Newcastle at home, so that can be a 0-0 draw or a 1-0 wins. ऐसे हो सकता है, ऐसे स्क्रैच आउट हो सकता है. इसके बाद समवन लाइक एस्टन विला का आप कोई डिफेंडर उठा सकते हो. जैसे मैंने कोस्टा नेडेलकोविच की बात की थी, तो कौन सा इज अ मच मोर सेफर पिक एंड इज गोइंग टू स्टार्ट. ही हैज लेस्टर, एवर्टन, वुल्व्स, इप्सविच, यूनाइटेड को भी जैसे मैंने बोला ग्रीन में काउंट करो. So these two are great options for upcoming game weeks. I don't think he's going to be that consistent. Palmer is not going to be that consistent, but in terms of goals. But I think in terms of assist, yes, he will be. और मेरे को लगता है वो इन्वॉल्व रहेगा, वो रेगुलर होने वाला है. सो a lot of managers are going for Palmer over Salah, जैसे मैंने बोला, because अगर आप Palmer के अभी आप देखो, अगर आप if you see Palmer के fixtures, and the thing is, you know, Chelsea and Spurs are similar in the way कि मतलब वो गोल स्कोर करते रहेंगे. It doesn't matter how much they concede, जितने मैचेस हार जाए, it doesn't matter, they're going to score. So that is the plus point about Chelsea कि मतलब भर भर के गोल्स आते रहेंगे. And if they are scoring, Haaland is involved. Oh sorry, not Haaland, Palmer is involved. He's on pens as well. And ये फिक्चर्स आपको अच्छे नहीं लगते क्या? Wow, this, मैं तो बोलूँ Chelsea, I think Palmer is a fixture proof asset as well. ठीक है, because Chelsea को फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको खेल रही है. They are going to score goals, they are going to lose, I don't care, but they will score goals. ठीक है, तो Palmer का सिचुएशन ये है. एंड अगर मैं वाइल्ड कार्ड खेल रहा होता तो I would have Palmer in my team. I would sacrifice, I would spend a lot of budget. मतलब मैं बहुत सारे प्लेयर्स को इग्नोर करूंगा फॉर Palmer. या बट हालैंड को अपने टीम में लाना जरूरी होगा. अब सॉन को उसके लिए सैक्रिफाइस करना, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज you have made that decision of bringing in Son. तो या प्रायोरिटीज. ओके, एंटनी रॉबिन्सन, या एंटनी रॉबिन्सन. उसके बाद, हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं. ओके, लेट मी सी. अभी हम देखते हैं हु आर द मोस्ट ट्रांसफर्ड इन प्लेयर्स. मैडुएके, भाई साहब, मैडुएके इज द मोस्ट ट्रांसफर्ड इन प्लेयर ऑफ दिस गेम वीक. क्या चल रहा है ये 2024 में? क्या चल रहा है? मैडुएके क्या कर रहा है? स्मिथ रो अंडरस्टैंडेबल. पामर, वेलबेक कैजुअल एफपीएल प्लेयर्स गेटिंग इन. वेलबेक वर्क भी कर जाए उनके लिए, हु नोस. Madueke 10.5, almost a million players have brought him in, because obviously अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, Madueke को क्यों ला रहे हैं? Because वो चाहते हैं लाना पामर को, बट प्राइस पॉइंट देखो ना, 10.6, 6.5 हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली लोग Madueke को प्रिफर करेंगे. And Madueke midweek खेला है, but he'll start obviously, he will start, that is I can assure you that.
कि he will start, but आने वाले टाइम में not sure because Joao Felix, Modric, Neto, Sancho, so many players. I Madueke, no. Rogers understandable, Robinson understandable, Raya understandable, Mazraoui. Let's see United के fixtures कैसे हैं. लिवरपूल के अगेंस्ट कंसीड करेगी, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट कंसीड करेगी, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट कंसीड करेगी. आई डोंट नो, इट्स टफ. अभी और देखना बाकी है. लेट्स सी हाउ ही डज वर्सेस या. और थोड़े फिक्चर्स हम देखें तो एज जैसे मैंने बोला डिफेंडर्स में आई थिंक एस्टन विला आर द फर्स्ट वन फॉर योर प्रेफरेंस, जो आपके प्रेफरेंस में हो सकते हैं. एंड देन चेल्सी के डिफेंसिव एसेट्स आई डोंट ट्रस्ट बिकॉज वो खुद इतने रोटेट होते रहते हैं एंड वी आर नॉट श्योर ऑफ हु इज गोइंग टू स्टार्ट. रॉबर्ट सैंचेस माइट बी एन ऑप्शन बट चेल्सी भर भर के कंसीड करेगी. उसके बाद एक मिनट, एक अंश का क्वेश्चन आया था. अंश का है अंश का. अंश ओके. एजे और गानाचो हु टू स्टार्ट. मैंने पहले गानाचो बोला था बट एजे इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट आउट ऑफ द टू. तो मैं स्टार्टिंग जो प्लेयर स्टार्ट कर रहे हैं उसको ऑब्वियसली ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, तो इसलिए एजे ओवर गानाचो. बट बोथ ऑफ देम आर आई थिंक नॉट गुड एसेट्स फॉर नाउ. मेरे पास भी दोनों है एंड आई हैव टू रिमूव देम सूनर और लेटर. एंड उसके बाद हाँ, वॉटकिंस का एक बंदे ने पूछा था. वॉटकिंस का बंदा कहाँ है? हाँ, तो वॉटकिंस आप 300 के रैंक है एट्स द स्टार्ट ऑफ द सीजन. टेक एज मेनी रिस्क एज यू कैन. बाद में जाके यू हैव टू मेक योर टीम मच मोर स्टेबल. तो हाँ, वॉटकिंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं या कर चुके हैं बेसिकली. एंड देन फुलम के ऑब्वियसली इसलिए एंटनी रॉबिन्सन वाज द वन जिसके हमने बारे में डिस्कस किया. एंड इप्सविच के हम डिफेंडर्स लेने नहीं वाले. लिवरपूल आई थिंक यू हैव टू टारगेट लिवरपूल इन द नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स एंड इसलिए मैं जोटा या फिर लुइस डियाज के ऊपर थोड़ा बुलिश हूँ. Okay. And then Newcastle. Yeah, Newcastle is struggling. I think Newcastle has to do well versus Tottenham. Nottingham Forest as Gibbs White. Gibbs White को मैं rotate कर सकता हूँ. Pretty good fixtures for now. And yeah, Wolves has signed. Yeah, okay. हाँ, तो probable. I think my team looks decent. It doesn't look bad. It's decent, but बस ये एजे और गानाचो बीच में दिख रहे हैं ना, बहुत गंदे दिख रहे हैं. मेरे को शक्ल नहीं पसंद आ रही है इनकी. तो फिर हाँ, ये दोनों तो सही है. इसके बाद व्हाट आर द मूव्स दैट वी कैन मेक, व्हाट आर द प्लेयर्स दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड आउट, वो भी देख सकते हैं. आई थिंक इजैक, सोलंके, फोर्डन तो पता नहीं कहाँ मर गया है. पता नहीं इसका कुछ एग्जैक्ट रीजन भी नहीं आया फोर्डन को हुआ क्या है. ठीक है, तो फोर्डन पता नहीं क्या हो गया. एनकुकू एज ए यस, एनकुकू तो बहुत गंदा बेचा गया है. Gordon, I think Gordon can still do well versus Spurs. If you own Gordon, लास्ट चांस दे सकते हो बिकॉज स्पर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हो सकता है. स्पर्स खुल जाती है बहुत इजीली, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंडरसन आई थिंक नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स में स्टार्ट करने वाला है. अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट काई हैवर्ट्स because again they cannot afford Saka. I think Havertz is someone that can provide more assists than goals. So if you're someone, हाँ, उतना consistent नहीं रहने वाला है Havertz and he's priced at 8 million. And now talking about Watkins, a lot of players are moving from Isak to Watkins. Watkins will be in high demand in upcoming game weeks. Uh, क्योंकि खेल है लेस्टर को, एवर्टन को, वुल्व्स, इप्सविच. सो फॉर दिस रन 9 million, बट स्टिल अभी प्राइस राइज नहीं हुआ है. बट आई थिंक he'll do well versus Leicester as well. Do you think Vardy scores versus Aston Villa? I think Vardy can do well versus Aston Villa at home. Why not? If you are looking for someone, if you want a cheeky differential for this game week, then it's Jamie Vardy. Jamie Vardy versus Aston Villa at home. नॉट बैड. मतलब जेमी वार्डी तो सही है. उसके बाद यार, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस गेम वीक, एनी ट्रांसफर्स, मतलब अभी बिकॉज नए नए साइनिंग्स हुए हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. व्हाट शुड आई डू अबाउट माय बेंच?
बेंच की हालत खराब है. Like no one is dependable right now. Uh, I think I have to Lewis Hall को I think I have to remove. Yeah, exactly. Jamie Vardy is a मतलब इतना shithousery merchant. He has to do the celebration versus Aston Villa. Break the flag again. Just a second. हाँ, अभी हम बेसिकली एक मिनट में बस रिक्वेस्ट है तो देख लेते हैं. मार्का की टीम देख लेते हैं. मार्का की टीम फक्ड अप है. लेट्स लुक एट मार्का's टीम. टीम आईडी क्या है? 6. Let's see Marca's team. आई थिंक काफी कैप्टेंसी के भी काफी अच्छे शॉट्स हैं इस गेम वीक में. साला वर्सेस यूनाइटेड, as history says, not a bad option, right? And then I think punts अगर आप देखो ना तो Isaac versus Spurs is also not a bad option. But it's going to stay on Haaland for now because West Ham is leaky. But West Ham has got Wan Bissaka. So we'll see Wan Bissaka versus Doku. So that will be a good fight to see. And then we have Killman and Todibo as well. So, 1 minute. Let me see. मार्का की टीम क्यों नहीं दिखाई दे रही? मार्का की टीम. Six, 8, 8, 6. Okay. Okay, so this is Marca's team, and he has two uh, free transfers, and basically इसको साला और हालैंड चाहिए. So how can we get Salah and Haaland or Salah or Haaland in two with two free transfers? I think Darwin Nunes का हटा सकते हैं. So if we get Darwin Nunes and remove and get in Haaland, okay. So now we have -7.8. So -7.8 में fuck. I think 3 transfers का वेट करना पड़ेगा मार्का को. There's nothing he can do. ऐसे तो नहीं आने वाला. कोई भी प्लेयर को आप कोई भी मिडफील्डर को हटा ले तो you're not going to get him. या वाइल्ड कार्ड इज एन ऑप्शन बट वाइल्ड कार्ड थोड़ा जल्दी हो जाएगा. आई थिंक नेक्स्ट गेम वीक के लिए वाइल्ड कार्ड हम वेट कर सकते हैं. आई थिंक अभी नहीं. वाइल्ड कार्ड इज अ वेट फॉर मी क्योंकि अभी हमें और पता चलने वाला है इंटरनेशनल ब्रेक में और थोड़े फिक्चर्स आई थिंक थोड़े और ट्रांसफर्स हुए हैं तो उसके वजह से विल सी रोटेशन इन द लाइनअप्स एज वेल. तो इसलिए यार अगर इसके पास अगर अभी डार्विन नूनेज है राइट तो इसके पास डार्विन नूनेज है तो ही कैन गेट हिम आउट एंड गेट अ समवन लाइक वुड. एक्चुअली में बहुत गंदी टीम है मार्का की, बहुत ही गंदी. तो आई थिंक ही हैज टू वाइल्ड कार्ड करना पड़ेगा लग रहा है. इट इज़ एन इशू. तो अभी आधा घंटा बचा है व्हाट डू वी से फॉर द डेडलाइन. तो मेक श्योर यू लॉक इन योर टीम्स एंड सेव कर लो. एंड बाय द वे लास्ट गेम वीक में काफ़ी सही किया वैसे. अगर हम देखें तो द पीपल हु ट्रिपल कैप्टन Haaland were pretty good. 51 points. So that is a lot. That's not less. Even though 17 points I don't think matter a lot. उतना उतना इफेक्ट नहीं करेगा. ओके हाँ.
तो लेट्स जस्ट सी, मैं एक बार ट्विटर में देख लेता हूँ कि इफ देर आर एनी न्यूज, एनी लीक्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. आई थिंक फिक्चर्स में अ लॉट ऑफ एक मिनट स्काउट का लेट्स जस्ट सी. हाँ, तो टोनी हैज फाइनली लेफ्ट फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड. टोनी हैज फाइनली लेफ्ट फॉर अल अली जो भी है. तो वी हैव वन मोर गाय हु इज इन हाई डिमांड राइट नाउ, who might just do well in the next few game weeks, is Mbuemo, who's fairly priced at 7 million. So if you're looking for a midfielder, then Mbuemo comes at 7 million, and this guy is on pens as well. And last season हमने देखा ही था how he was without Tony. So Mbuemo is that guy, and fixtures are not that bad as well. And Brentford tends to do well versus big teams, but at home. तो ये दोनों अवे गेम्स हैं एंड आई डोंट थिंक ब्रेंटफोर्ड विल विन हियर. बट उसके अलावा अगर आप एम्पोएमो को देख रहे हो, देन साउथहैम्पटन, वेस्ट हैम, वुल्व्स, आई थिंक पोस्ट गेम वीक 5 एम्बुएमो माइट कम इन डिमांड. साला टू पामर. A very tough choice, a very, very tough choice, because I am targeting Liverpool's assets from next game week. And let me just show you Salah's fixtures. I think if you're on wild card, you can have both of them. You can have both of them, but just look at Salah's fixtures. Two home games. Cole Palmer, I think is not. I've said before, is not going to score as much. इतने goals नहीं मारेगा, but he'll be involved in somehow. He'll give a lot more assists as well. But you cannot bet against Salah. That's what we have learned in all of these seasons. I wouldn't move from Salah to Palmer. I rather move from Saka to Palmer or Son to Palmer, but not Salah to Palmer. That's just too much of risk. Okay, then you're playing like that's actually not a bad way of playing the game, because actually it's very tough to win the whole game. So why not just target every game week? For that, yes, definitely. For this game week, for only one game week, yes, Salah to Palmer, you can do it. But yeah, I think Salah can get a pen versus United. So, but if you think Palmer can score more than one goal versus Crystal Palace, okay, then you can get him. Uh, Varna, I think if you're playing just a normal game week, you're having a normal game week, then I wouldn't suggest Salah to Palmer. On your wild card, yes, Salah to Palmer works. Yeah. तो उसके बाद लेट्स सी जस्ट एक मिनट फ्यू मिडफील्ड ऑप्शंस दैट वी माइट हैव मिस्ड आउट ऑन. I think Bruno Fernandes is being sold, but he had a high XG. He's someone that is missing out on a lot of points from the first two game weeks. I think this is the last game week that you can keep him for. After this, you can move on from Bruno Fernandes, because once this guy starts performing, he doesn't stop, and let him get at least one penalty. I think इसके बाद देखो ना, these kind of साउथहैम्पटन एंड क्रिस्टल पैलेस ऐसे गेम्स है जो स्क्रैच आउट करके यूनाइटेड जीतेगी, एंड उसमें ब्रूनो फर्नांडिस ही होगा जो पेनल्टीज लाएगा, या फिर जो who will take set pieces and bring you assists. So Bruno Fernandes can haul any time, and I would have him in my team, but I didn't have budget for him. So from the first game week, I brought in Garnacho because I could not afford Bruno Fernandes. Okay. उसके बाद then we have Madueke, who is the most transferred in player of this game week. Okay, he had first game खेला भी नहीं वो. Crystal Palace at home. Chelsea के fixtures are not a problem. There will be a rotation. And यहाँ पे आप देख रहे हो 1 सितंबर एंड 15 सितंबर इंटरनेशनल ब्रेक में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं. मे बी वील सी एनकुकू स्टार्टिंग अगेन आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक. ठीक है, और लेफ्ट में देखो ही इज गोइंग टू स्टार्ट ऑल्टरनेट गेम्स एटलीस्ट. ठीक है,
एंड अगर वो कॉन्फ्रेंस लीग बीच में नहीं आता है तो आई थिंक एनकूकू कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम द लेफ्ट विंग, बट फॉर नाउ यस ही इज आउट, ऑब्वियसली इज आउट. तो अभी व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई एम प्लेइंग 3-5-2. आई एम प्लेइंग 3-5-2, तो आई कैन नॉट बेंच अ मिडफील्डर एज वेल. तो वो प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट बेंच अ मिडफील्डर. तो आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग फ्रॉम गनाचो और एजे टू डियोगो जोटा. बट क्या Garnacho punish me versus Liverpool? Can United do something versus Liverpool? United is playing at home. क्या ये स्लो गेम होगा? आई डोंट थिंक स्लो गेम होना चाहिए, बिकॉज आर्ने स्लॉट का मैंने जितना देखा है फर्स्ट 2 games में, Liverpool are not going to be slow. And when Jota is on the pitch, which means much more clinical, much more just goal scoring, that clinicality is there, right? वो चीज बढ़ जाती है. So I'm looking at Luis Diaz and Jota right now. They are the ones that I really want to go for, but I want to go in the international break with two transfers. क्योंकि उसके बाद काफी हेल्प करेंगे 2 transfers. So do you think I should either keep the transfer or bank a transfer? Oh, sorry, I should bank a transfer or use the transfer, because Garnacho, uh, I don't know why he's not starting Garnacho. It's really disappointing because the way he's dodging points. Just a second. Marka bhai. Hmm. So we have, yeah. So let me just go through my fixtures right now. Okay, एक मिनट रुक जा. लेट्स जस्ट ओपन एक बार मार्का की टीम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, बिकॉज इज. तो मार्का देख यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देते हैं टीम में. यू कैन नॉट गेट यू कैन नॉट गेट हालैंड राइट नाउ बिकॉज यू नीड 3 ट्रांसफर्स. तो आई थिंक ये गेम भी तू निकाल ले, एंड उसके लिए आई डोंट थिंक यू कैन गो विदाउट साला. ऑब्वियसली साला चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट हालैंड इज अ प्रॉब्लम. बट एक गेम वीक तुझे निकालना है कैसे भी. नेक्स्ट गेम वीक में यू कैन we'll activate the wild card for you. Okay. तो अभी के लिए हम बस एक फॉरवर्ड लाते हैं, बिकॉज यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर टीम. तू 2 चीज कर सकता है, ठीक है. अभी तू ये गेम वीक में कोई ट्रांसफर ना कर, ठीक है. नेक्स्ट गेम वीक में फिर तू बिना वाइल्ड कार्ड के यू कैन प्रोग्रेस. और द सेकंड थिंग यू कैन डू इज प्ले मेक गेट जस्ट अ स्ट्राइकर दिस गेम वीक. ज्यादा ट्रांसफर्स मत कर, जस्ट गेट अ स्ट्राइकर, एंड नेक्स्ट गेम वीक में हम वाइल्ड कार्ड करेंगे. तो दैट्स 2 ऑप्शंस राइट नाउ. एंड आई वुड सजेस्ट कि डार्विन नूनेस को हटा के देख मैडुएके और वो सब. हम मैडुएके समवन हु इज मैडुएके ज्यादा स्टार्ट नहीं करने वाला. इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही विल नॉट गेट अ लॉट ऑफ स्टार्ट्स, बिकॉज दे हैव नेटो, दे हैव व्हाट डू वी कॉल जाओ फेलिक्स. तो मुझे नहीं लगता कि अ लॉट ऑफ पीपल. अब मैं तेरे को बता रहा हूँ मैडुएके इतना ट्रांसफर्ड इन प्लेयर क्यों है. मैडुएके है बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड पामर राइट नाउ. स्टार्ट लुइस डियास और रॉजर्स, दोनों स्टार्ट कराओ भाई. स्मिथरो को बेंच करो. इफ दिस इज अ प्रॉब्लम, बेंच स्मिथरो. और इफ यू हैव अ शिट मिडफील्डर, बेंच हिम. तो मार्का फॉर नाउ आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लीव द टीम एज इट इज, मेरे को लगता है. एंड अपना कैप्टन सही चुन लो, सही अच्छे से चुन लो. तो वो चीज रहेगी. हाई में शुड आई सेल इजैक एंड ब्रूनो फॉर पामर एंड मोनीज. इजैक एंड ब्रूनो फॉर पामर एंड मोनीज. Both are really good options, yaar. I don't know. I don't think so. For just this game week, you can be patient with your transfers regarding Isaac and Bruno just for this game week. And from the next game week, you'll have much more sample size. You'll have much more data to look at. ठीक है. तो
Then you can move to Palmer and Muniz. Palmer is not a bad option any day, but I think you can give one more game week to Bruno and Isaac. Isaac can do something versus Spurs. Bruno can get a penalty versus Liverpool, even though United might not win. Doku is the third mid. I would bench Doku. I don't know actually. You have Luis Diaz, Rogers, Doku, and who's your fourth or fifth midfielder? तो मैं क्या बोलता मार्कर राइट नाउ आई थिंक यू शुड जस्ट लीव योर टीम एज इट इज अपना टीम ऐसे ही छोड़ दे एंड पिक द राइट कैप्टन नेक्स्ट गेम वीक में यूल हैव 3 ट्रांसफर्स एंड देन यू कैन गेट इन हालैंड ओके तो ये मार्का की टीम डिस्कस हो गई ओके यू हैव जोटा साका डोकू लुइस डियास एंड रॉजर्स this is very tough one by Luis Diaz can do something versus United, so I'll bench Doku. Unfortunately, I'll bench Doku. So yeah, I think you should start Luis Diaz and Rogers. But Doku might just, I don't know, go with your gut, go with your instinct. If you feel that Doku might do something versus West Ham, yeah. So this is how I am with my team: Henderson, Van de Ven, Ruben Diaz, Gabriel. I can do Van de Ven to Virgin Van Dijk. Yes, Virgin Van Dijk. You heard that right. And then I can do Garnacho or Eze to Jota. So that is the two transfers that I'm looking at are Van de Ven to Van Dijk or Garnacho to Jota. One transfer I've already made Nkuku to Rogers because Nkuku का price already काफी down हो चुका है. So I wanted to move on from him. Rogers is someone that who can do well in the upcoming game weeks. Rogers मेरे लिए set and forget हो जाता है. Unai Emery, as I said, he praised a lot about Rogers and he has decent fixtures. And इसलिए I think Rogers should get 3 involvements in the next 4 game weeks. That is not much to ask. I think ज़्यादा नहीं है. So yeah, Van de Ven I think will concede versus Newcastle. I think Van de Ven will concede, and I have Lewis all on my bench. One transfer that I can do is Howard Taylor-Bellis to Costa Nedeljkovic. Nedeljkovic is a right back for Aston Villa who is covering up for Matty Cash, who is injured for 4 weeks. So I can do this, but I'll have 0 transfers. Nosta Nedeljkovic. Should I bank a transfer or make a transfer? That is the question. Should I bank a transfer right now or make a transfer? This is where I'm stuck at. If you think, and काफी लोग अभी Palmer में फंसे हुए हैं, Palmer, it's a budget issue. If you can afford Palmer, yes. Do I prefer him over Salah? No. Do I prefer him over Haaland? No. Would I remove Bruno Fernandes for this game week? No. Will I remove Son this game week? No. You cannot get everyone. That's the problem. And if you have made a decision of getting those players before, just trust on your players for this game week. Because after international break, you'll have a lot of choices to choose from, a lot of players to choose from, a lot more, clarity on the players. Madueke is not someone that you can depend on after a few game weeks. He might work for you this game week. Crystal Palace के against भी Crystal Palace hold करती है. ऐसा नहीं है, but हाँ, Chelsea will score at least 2-3 goals for sure. Chelsea is someone who doesn't care about the score line. They don't care if they lose or not. They will score a lot of goals. So yeah. Should I be aggressive in this game week or should I hold out? That's the question. तो इधर ही मैं फंसा हूँ कि should I get someone like Jota or Luis Diaz right now versus United who can do well? Can Garnacho do well versus Liverpool? I don't think so. I just want him to start because बाद में जाके at least I'll know कि he will do decent versus Southampton or Crystal Palace. So that is what I want. I just want Garnacho to start. Okay. And randomly अगर रूबन डियाज बेंच हो गया
then मेरे टीम के लग गए हैं, then that will be a problem because I cannot afford a lot of rotations in my team right now. But I want two transfers. I have one transfer right now. I want two transfers going into the international break. So yeah, if you're someone who doesn't have Haaland or Salah, if you are someone who doesn't have Haaland or Salah, who are you captaining? Are you captaining Son or Saka? Saka, let me just see Saka ke fixtures. Let me just see Arsenal ke fixtures. They're playing Brighton, Spurs, City, Leicester. Tough one. I think Saka to Palmer. Yes, if you ask Saka, I will transfer him to Palmer right now. That's not a problem. Make like the Palmer, even though Saka performs in this game week, I think Palmer will do eventually do well in the next 4 5 game weeks. Okay. So we have 9 minutes left in the deadline. So make sure you lock in your teams. I'll be looking at Twitter right now for few leaks if there are any leaks regarding the first fixture. First fixture कौन सा है? First fixture is Arsenal versus Brighton. Early kickoff for Saka. Bench Muniz for Gordon. Oh, Muniz is playing less. Oh, sorry, Ipswich. Oh, this is a tough one. This is a very tough one. And whoever you are going to bench is going to score. So go with your instinct. If I had Muniz, I will start him over Gordon just because of the fixture I see, not because of the ownership. Just because of the fixture I see, I'll prefer Muniz over Gordon. But this is more of an instinct. You have to choose based on your instincts. It's not based on what I say. My opinion would be probably Muniz over Gordon. But yes, that's because he's facing Ipswich. Okay. Let me just check Twitter for any leaks. If you have any leaks. Do we see any surprises in the Arsenal versus Brighton? I can see a lot of managers going for Mitoma as well. Mitoma, he doesn't play that. Last season he was totally into the box. अभी थोड़ा wide खेलता है. So and we have Welbeck and João Pedro both starting together. Okay, so they are the two strikers playing with each other, right? तो उसके लिए मिटोमा के लिए कितना स्पेस बनता है? तो he is like a Luis Diaz kind of a asset, but Luis Diaz is much more of a threat than Mitoma as an FPL asset. अगर हम देखा जाए तो Mitoma is someone that players might consider in the upcoming game week. Should I remove? Should I get in an Aston Villa defender? I'm confused. Should I? Okay. Fake news भर भर के आ रही है. Okay. So I think I'll go with Garnacho and Eze in this game week. Not at all optimistic about Eze and Garnacho in my midfield. Let's see if Haaland can save my ass yet again. I'm expecting Haaland to do Beds versus West Ham again because अगर नहीं हुआ तो then there'll be a lot of problems. So just 5 minutes left into the game week. Make sure you just lock in your teams. I'll just get my charger. 5 minutes left into the deadline, and yeah. Oh,
There are no leaks regarding the news for Arsenal versus Brighton. I think same Arsenal will be the same unchanged 11. I don't think there'll be any changes there. Maybe Martinelli, we can see Martinelli starting. I don't see a lot of changes from Arsenal. Maybe Welbeck or João Pedro, there might be some rotations, but I see them starting as well. So, should I get in Jota for this game week? Should I get in Jota, Diogo Jota, or Luis Diaz? Luis Diaz or Diogo Jota for this game week? I think I'm going to get in Jota. I think Jota is going to come in. Garnacho, I cannot depend on, unfortunately, even though he might be a great asset later. But yeah, I think I'm going to do Garnacho to Jota. Yeah, I've gotten Jota in my team. So I've made my two free transfers. I've gotten Rogers for Nkuku and Diogo Jota for Garnacho. So this is going to be my game week 3 team. And the deadline is very close. So make sure that you lock in your teams. And yeah, if you're going with predictions, let's just predict the game week quickly. Arsenal Brighton, I think 2-1 win for Arsenal, one penalty for Saka, and one goal for Odegaard maybe. And then Brentford Southampton. Embuemo, I think Embuemo does well. 2-1 win for Southampton again. Oh, sorry, Southampton, no, Brentford. 2-1 win for Brentford. Everton versus Bournemouth. Everton injury भर के. So I'm guessing Everton versus Bournemouth में I see 1-1. I don't see Everton winning this. They should, but they're not going to win this. Ipswich versus Fulham. I think Ipswich can do well versus Fulham. I think Ipswich will do well versus Fulham. I think Ipswich can beat Fulham as well. McKenna's second home game. Finally, a good fixtures because Ipswich ने पहले खेला है Liverpool को and then City को, and they were not bad. So Ipswich can beat Fulham. I think 2-1 win for Ipswich versus Fulham. Leicester versus Aston Villa. This will be, I think, 2-2. Leicester, Aston Villa 2-2. So, by the way, 2 minutes left into the deadline, and I've made my transfers. I'm not saving my transfer. I have Van de Ven, Ruben Diaz, Gabriel, and then on midfield I have Rogers, who I got in for Nkuku, and then I have Eze. I've got in Diogo Jota for Garnacho. So I've made my two free transfers, and I expect Diogo Jota to deliver versus Man United. And then I have Gibbs White, who did really well for me last game week. Mohamed Salah should do his bits versus United. Isaac, who's given the last chance. So lock in your teams, 1 minute to go. And make sure you save in your transfers. Yeah. Save your team. Choose your captain and save your team. Yeah. And this we were talking about predictions. Nottingham Forest versus Wolves. I think 1-1. A lot of draws. I'm predicting a lot of draws this game week. West Ham versus Man City, a fixture where West Ham has performed well before. So I'll go with 3-3. I'll go 3-3. I see two goals from Bowen, and yes, obviously goals from Haaland, De Bruyne. Chelsea versus Crystal Palace. I see goal from Enzo, maybe penalty from Palmer. Newcastle versus Spurs, another good fixture.
So yeah, deadline has passed. So yeah, the next was United versus Liverpool game. Sunday night game, United versus Liverpool. Tough one. United at home. They'll have Lisandro and Delete starting with Dallo and Mazerowi. And yes, we will not see Ugarte. Obviously, Ugarte, I think we should not see him in the squad as well. But yeah. So this is the stream for the deadline stream for game week 3. So this is what we are ending right now. I've made my 2 transfers. Yeah, game is updating. So I have made Nkuku to Rogers and have done Garnacho to Diogo Jota. Captain is Haaland, and let's see how this game week goes. तब तक के लिए thank you for joining in. Bye.